Exercise 1A, real numbers, class 10. Question number 4. Determine the greatest number which will divide 445, 572, 699, leaving remainder 4, 5, 6 respectively. Inote ye greatest number ko amnagdan again. How do you greatest number ara? Ya number ge tham ko divide kaude remainder 4, 5 aro 6 ko produce again. तोदे ये रंको solve करना लगता है ये नंबर रंको divisible होगा चिंग लगता नंगेन या ये नंबर रंग divisible होंगे में से ये remainder रंग नाखतिंगा इसका बा ये नंबर के एक थमनी HCF को अपना नोडे ना या खुद divisible होगा नंगेन ये नंबर रंको divisible होगा नोडे या 445 को 4 ची या 445 पोनी को 4 को माइनस करना अंगेन 572 नी को 5 को माइनस करना अंगेन और 699 नी को 6 को माइनस करना अंगेन उनसा ये नंबर रंग दे डिविजिबल होंगेन ये नंबर रंग डिविजिबल होंग जाओ दे ना इनी HCF को मान जावा इनी के मन क्रम के सेगना the numbers are 445 minus betongen 4 equal to betongenok 441 ginig bode 572 inoniko 5 ko minus kas kagen ini betongenok 12.5 yang ode acha 2 yang jok 3 yang jok 7 dong kinga divine ode 6 567 divine 699 inoniko de yes 6 ko minus kagen inode betongenok 9 minus 60 3 divine inode 693 divine ask again which are exactly divisible by the greatest number. So the year number ang sa exactly divisible by greatest number ong inga. So the American by using Euclid's division algorithm by using Euclid's division algorithm तो American second highest number को छोनबात कबा number ची divide करनांगेन देखिए ना 441 ची 567 को divide करेंगे इन्हें बताऊंगे 441 into 1 कौड़े 441 इन्हें minus कौड़े 7 minus 1 दे 6 इन्हें 6 minus 4 2 5 minus 4 1 तो remainder 126 से 441 को divide करेंगे one remainder 0 को जरा better again divide करेंगे तो 126 into 3 count दे better इबेंगा 3 6 are 18 carry over 1 3 2 is 6 plus 1 7 देखना 3 1s are 3 देखना 11 minus 8 दे 3 देखना इन्होंने better होंगे क्या 14 oh sorry इन्होंने 3 होंगे क्या इन्होंने को 1 आउंडे 13 13 इन्हें 7 आउंडे 3 yang jok 4 yang jok 6 63 देखना 63 ची 126 को divide कर सकते हो इन्होंने 63 into petongnya 2 देखना 2 3s are 6 2 6 are 12 minus का तो 0 तो 0 aha ini man Euclid's division algorithm को सकले मना आज again इन्होंने 5 6 7
yan dividend ongya equal to divisor de 441 into quotient de 1 plus remainder de 1 to 6 digimna ya line de 441 equal to 1 to 6 into 3 plus remainder de 63 ya line de 1 to 6 equal to 63 into 2 plus remainder de 0 digimna as again since remainder is equal to 0, so therefore HCF of 441 and 567 is equal to Petawana last kaba divisor 63 now to dia 63 chi ya talbat kaba number ko 693 ko divide kas kagano 693 so the 63 into 1 ko de 63 dimna 9 minus 3 de 6 dimna 3 ko de 63 aro changsa say 63 into 1 63 minus ka to de 0 to the remainder 0 ani given stop ka no in given 693 is equal 693 is equal to divisor de 63 into quotient de 11 plus remainder de 0 so the answer again therefore HCF of 441 567 or 693 will be equal to 63 then last by divisor 63 so therefore the required number is 63